Hello kids, welcome to Anudeep, your study buddy. This is the fourth and last lecture of topic metals and non-metals. Today we are going to cover the chemical properties of non-metals, corrosion of metals, alloys and uses of metals and non-metals. So let's start with the chemical properties of non-metals. First is reaction with oxygen. Non-metal react with oxygen to form non-metal oxides. These oxides are generally acidic or neutral in nature. For example, here sulfur will react with oxygen to form SO2, that is sulfur dioxide. Phosphorus is a very reactive non-metal. It catches the fire if exposed to air. Hence, it is always stored into the water. Next is reaction with water. Non-metals are mostly non-reactive with water. Third, reaction with acids. Non-metals generally do not react with acids. Fourth, displacement reactions. We'll study the displacement reaction of non-metals in higher classes. Next is corrosion. When we were discussing the metals, we forgot to discuss about the corrosion of metal. That's why we are discussing here now. जब मेटल सरफेस का इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एयर एंड मॉइस्चर से रिएक्ट करने पर डिस्ट्रक्शन होता है उसे हम कोरोजन कहते हैं. दिस इज वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड मॉइस्ट एयर विच टार्निशेस द मेटल ग्रेजुअली. इसमें हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट कोरोजन ऑफ सिल्वर. आपने कभी भी अपने घर में सिल्वर की चीज़ों पे देखा होगा, विथ टाइम वो ब्लैक हो जाती है, ब्लैकिश हो जाती है सिल्वर की चीज़ें. सो वैसे तो सिल्वर इज़ क्वाइट अनरिएक्टिव मेटल. आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो उसमें सिल्वर जो है वो बहुत नीचे आता है. स्टिल इट कंबाइंस विद द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है टू फॉर्म अ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड. रिएक्शन यहाँ पे मेंशन की हुई है. And this one silver item loses their luster with time is called tarnishing. नेक्स्ट इज सेकेंड कोरोजन ऑफ आयरन. सो आपने ऐसा देखा होगा बहुत बार कि अगर आयरन की कोई भी चीज़ ऐसे ही रख दी गई है तो वो ग्रेजुअली स्लोली मॉइस्चर से रिएक्ट करके एक ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस बना लेती है जिसे रस्ट कहते हैं. ये यहाँ पे आपको एक आयरन नील में दिख रहा है इस टाइप का. सो व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम इट टर्न्स रेडिश ब्राउन इन कलर एंड दिस इज द रस्ट. इक्वेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है आयरन कैसे मॉइस्चर और एयर से रिएक्ट करके रस्ट बनाता है. Now, corrosion of copper. Copper is quite unreactive metal, however, it also gets corroded. Copper reacts with oxygen, carbon dioxide and moisture to develop a green color coating of copper hydroxide and copper carbonate. Reaction is mentioned here. This is the reason why copper vessels acquire a full green coating with passage of time. Next topic is alloy. अलॉय केमिकल एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है जिनमें एटलीस्ट एक मेटल होता है. सो एन अलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ आइदर टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल. नाउ इफ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस का मिक्सचर जो इतना थॉरोली ब्लेंड किए हुए कि यू कैन नॉट सी इंडिविजुअल सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड द होमोजेनस मिक्सचर. सो अलॉय में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे आर thoroughly blended with each other so that they make a homogeneous mixture. Alloy will retain all the properties of metal such as luster, electrical conductivity, ductility, but may have more desirable properties like greater tensile strength and hardness than pure metal, more corrosion resistance, lower melting point than the pure metal. So alloy may reduce the overall cost of the material while preserving the important properties. Example of alloy are white gold, which is the mixture of gold and silver. Second, brass, which is the mixture of copper and zinc. Third, stainless steel. Here it is the mixture of iron, chromium, nickel and carbon. Here carbon is a non-metal. Next, uses of metals. Metals are useful to us in several ways. From the mode of transport we use like train, bus, ship
to packaging material like aluminum foil, to jewelry like gold, silver, platinum. We use metals based on their properties. Here are some metals are mentioned with their uses. Apart from that, tungsten is a metal which is used to make the filament of light bulb. आपने लाइट बल्ब में देखे होंगे ऐसे पतले से फिलामेंट्स होते हैं, बिकॉज इसमें टंगस्टन इसलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज इट ग्लोज वाइट हॉट विदाउट मेल्टिंग. Next, uses of nonmetals. Living things such as plants and animals, including human beings, are mostly made up of compounds of nonmetals such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Oxygen is essential to animal life. We breathe in oxygen. It is also used for medical purpose. Here some nonmetals are mentioned like hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen and sulfur with their uses. Apart from these, phosphorus is used in the firework industry. Chlorine is a powerful disinfectant. It is used to purify water for drinking as well as for disinfecting water in swimming pools. Here we complete our topic metals and non-metals. You try to solve the questions. If you have any doubt or problem, then comment it into the comment box. We'll try to solve it. If you enjoy this video, then please do like and subscribe our channel. Thank you.